welcome you all in the first semester MSc Chemistry. Today I am going to start Unit 3rd of your third paper Physical Chemistry, that is Chemical Dynamics. आज हम लोग आपके सिलेबस की तीसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे केमिकल डायनेमिक्स. Chemical dynamics constitute an important branch of physical chemistry. It is a very important branch of physical chemistry which deals with measurement of rate of reactions proceeding under given conditions of temperature, pressure and concentration. Pressure, temperature and concentration की स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शंस को मेज़र करते हैं. द स्टडी ऑफ दिस ब्रांच हैज़ बीन हाईली यूजफुल इन डिटर्मिनिंग द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस रेट ऑफ रिएक्शंस सच एज in understanding mechanism of a number of chemical reactions. The mechanism of various chemical reactions are studied under this branch. The experimental data have led to the development of the modern theories of chemical reactivity of molecules. That is, the theory of reactivity, chemical reactivity of molecules are also studied with the help of experimental data. The studies have also been useful in working out conditions for getting maximum yields of several industrial products. What are the best conditions to obtain maximum yield of various industrial products can be determined with the help of chemical dynamics. So, you can see that it is a very, very useful branch of physical chemistry. Physical chemistry की ये बहुत ही useful branch है. Before studying this branch, we have to know about some general terms. First of all, molecularity of a reaction. Molecularity of a reaction. What is the molecularity? It is the sum of the number of molecules of various reactants that take part in a chemical reaction as represented by a balanced chemical equation. What is this? Molecularity is the sum of numbers of molecules of various reactants that take part in a chemical reaction as represented by a balanced chemical equation. So, molecularity determine करने के लिए हमें क्या चाहिए? We have balanced chemical equation. एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन. उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का नंबर होता है वो उस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कहलाती है. फॉर एग्जांपल, यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शंस मीन्स दोज रिएक्शंस whose molecularity is 1 are known as unimolecular reactions. Example, Br2 give rise to 2Br. Bromine molecule is converted to bromine free radical. So, in this reaction, only one molecule of bromine is taking part. So, the molecularity of the reaction is 1. Similarly, bimolecular reaction, when two molecules of reactant take part in a chemical reaction. Example, inversion of cane sugar. You know, it is a very common reaction, inversion of cane sugar. When sucrose is hydrolyzed
it forms glucose and fructose. C12H22O11 plus H2O will give C6H12O6 and C6H12O6. Molecular formula is same, but one molecule is of glucose and other is of fructose. Similarly, trimolecular reaction. If number of reactant molecules are 3, 2NO plus O2 is equal to 2NO2. So, it is the molecularity of a reaction. There is one more term, order of a reaction. अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन. क्या है? द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज गिवन बाय नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स whose concentration alter during the chemical reaction. The number of atoms or molecules whose concentration alter during the chemical reaction is defined as the order of reaction. उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स का नंबर जिनका कंसंट्रेशन अभिक्रिया में परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाते हैं. इसको हम दूसरे वे में भी डिफाइन कर सकते हैं. और द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स whose concentrations determine the velocity of a reaction. The order of reaction is given by the total number of molecules or atoms whose concentration determine the velocity of a chemical reaction. So, this is the order of a reaction. Molecularity is always whole number, while the order of reaction may be in fraction also. Now we come to rate of reaction. What is the rate of reaction? The rate of reaction is defined as the amount of product in grams per mole formed in unit time under stated conditions. Stated condition means specified conditions. Under specified conditions, the amount of product formed in unit time is the rate of that chemical reaction. The amount of the product is taken in gram moles. The rate of the reaction is defined as the amount of product in gram moles formed in unit time under specified conditions or stated conditions. Now, velocity constant or rate constant. The mathematical relation किसके बीच में? Between the rate of the reaction and the concentration of the reaction components, that is reactant, is known as the rate equation or rate law expression for the reaction. The mathematical relation किसके बीच में? Between the rate of the reaction and the concentration of reactants is known as the rate equation, or we can say rate law expression. Now we know, according to the law of mass action, the rate of a chemical reaction varies directly as the active mass of the reactants, or we can say the rate of reaction is directly proportional to the active mass of the reactants.
Now we consider a homogeneous reaction. A plus B converted into product. Homogeneous reaction means both the reactions and products are in same phase. That is, they are in same physical state. A plus B is equal to product. Now, at a particular temperature, the rate of the reaction is given by rate of the reaction कैसे देंगे? The amount of product formed in unit time, that is dx by dt. It is dx by dt, and it is also equal to k Ca Cb. Equation number 1. R is equal to dx by dt is equal to k Ca Cb, where k क्या है यहाँ पे? K is a constant. K is a constant which is characteristic of the reaction and is known as rate constant or velocity constant of the reaction at a given temperature. K is a constant for a particular reaction known as rate constant or velocity constant. Ca and Cb are concentrations of reactants A and B respectively. Ca is a concentration of reactant A and Cb is a concentration of reactant B. X denotes the amount of product at time t. T टाइम में x अमाउंट प्रोडक्ट का फॉर्म होता है. किसमें? ग्राम मोल. अब इफ Ca और Cb 1 के बराबर हो, यूनिटी, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट इज यूनिटी. तो हम इक्वेशन 1 में C और Cb की जगह क्या रख सकते हैं? 1 into 1. So we get R is equal to K. What we get? We get R is equal to K. So this is equation 2. Now from this equation we can define the rate constant. The rate constant of a given reaction is defined as equal to the rate of reaction when the concentration of each of the reactant is unity. The rate constant of a reaction is defined as equal to the rate of reaction when the concentration of each of the reactant is unity. If the concentration of each and every reactant is unity, then the rate of such reaction is known as rate constant. R is equal to K. Now we come to units of K. K की unit क्या होंगी? Suppose we have a general reaction. Small a molecules of reactant A react with small b moles of reactant B and so on. Small c moles of reactant C, so on, and convert into product. तो रेट इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? R is equal to dx upon dt. ये किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल टू K रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर स्मॉल a.
concentration of B की पावर small b, so on. यानी R is equal to K C A की पावर small a, C B की पावर small b and so on. This is equation number 3. ये हमारी इक्वेशन नंबर 3. अब यहाँ R की यूनिट है रेट मोल लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. dx कंसंट्रेशन मोल पर लीटर अपॉन dt. तो मोल लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. और CA और CB की यूनिट है मोल लिटर इनवर्स. अब सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 and 5 इन 3. तो R की जगह हमने क्या लिख दिया, मोल पर लीटर इनटू सेकेंड इनवर्स. ठीक है, इज इक्वल टू K इंटू CA की यूनिट मोल पर लीटर की पावर A इंटू CB की यूनिट मोल पर लीटर की पावर B इंटू सो ऑन. तो यहाँ से हमारे पास K इज इक्वल टू आता है लीटर अपॉन मोल की पावर A प्लस B प्लस सो ऑन -1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 1 लीटर है नीचे, इंटू सेकेंड इनवर्स. सो दिस विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. K इज इक्वल टू लीटर अपॉन मोल की पावर A प्लस B प्लस सो ऑन -1 इंटू सेकेंड इनवर्स. इक्वेशन नंबर 6. इसमें हम A B की वैल्यू रखकर रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग रेट लॉ. ये जो रेट लॉ है इसको हम किस तरीके से डिटर्मिन कर सकते हैं. फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द रेट लॉ आर डिफरेंट विच कैन बी डिटर्मिन्ड बाय इंटीग्रेशन मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल, zero order reaction. What are zero order reaction? Zero order reactions are those reactions whose rate of reaction does not change with time or with concentration of any of the reactant. What does it mean? Reactions in which the concentration of the reactants do not change with time and the rate of reaction remains constant throughout are said to be zero order reaction. अर्थात इनका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता और रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कांस्टेंट बना रहता है. रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट आर सेड टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन. एग्जाम्पल इज H2 plus Cl2 in the presence of photon react to give twice HCl. For this reaction, the concentration of hydrogen and chlorine does not change with time and rate of reaction is constant throughout. For such a reaction, consider a reaction A is converting into B. Initially, the amount of reactant A is small a
and B is 0. So, for this is a zero order reaction. So, dx upon dt is equal to k. Ca की पावर 0, Ca की पावर 0 इज 1. किसी भी चीज़ की पावर 0 कितनी होती है? 1. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? dx अपॉन dt इज इक्वल टू k. या हम इसको लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू k dt. dx इज इक्वल टू k dt. अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया? dx इट इज x इज इक्वल टू k कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन होगा t. तो kt प्लस i, वी हैव टू टेक वन कांस्टेंट विच इज नोन एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट. अब when t is equal to 0, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट x इज इक्वल टू 0. t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू भी 0. तो i बराबर क्या आ जाएगा? i इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू kt. इक्वेशन नंबर 2. x इज इक्वल टू kt. दिस इज द रेट इक्वेशन या रेट लॉ फॉर zero order reaction. It is a general rate equation for zero order reaction. Now, unit of zero order reaction is k is equal to x upon t. तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स. कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है? मोल लीटर इनवर्स. तो यहाँ यूनिट क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स. दैट इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. The concentration of the product increases linearly with time and passes through origin. क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है. तो टाइम के साथ अगर हम प्रोडक्ट के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी एंड इट पासेस थ्रू ओरिजिन. सो these are the characteristics of zero order reaction. On the next turn, we will study about first order reaction. This is all for today. Thank you very much.